Shakyam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Hare Krishna. We are reading Srimad Bhagavatam, second canto, chapter number 10, titled as Bhagavatam is the answer to all the questions. Shloka number 4. So in this series of shlokas, we are learning about 10 purposes of Srimad Bhagavatam. Here it is described by Shukdev Goswami to Parikshit Maharaj. Sthitir vaikuṇṭha-vijayaḥ poṣaṇaṁ tad-anugrahaḥ manvantarāṇi sad-dharma ūtayaḥ karma-vāsanāḥ. Translation. The right situation for the living entity is to obey the laws of the Lord and thus be perfect, thus be in perfect peace of mind under the protection of the Supreme Personality of Godhead. The Manus and their laws are meant to give right direction in the life. The impetus for activity is desire for fruitive work. So it's a very nice shloka. It says that vaikuṇṭha-vijayaḥ, the word used is vaikuṇṭha-vijayaḥ, the victory of the Lord of the Vaikuṇṭha. Tad-anugrahaḥ, which is the causeless mercy of Lord. Manvantarāṇi sad-dharma, performing the occupational duty in the reigns of Manu. Ūtayaḥ karma-vāsanāḥ, most impetus for the work is desire for fruitful activities. So, sthitir vaikuṇṭha-vijayaḥ poṣaṇaṁ tad-anugrahaḥ manvantarāṇi sad-dharma ūtayaḥ karma-vāsanāḥ. So the perfect situation, sthitir, for all of us is to obey the laws of Supreme Lord, vaikuṇṭha-vijayaḥ, and thus be in the perfect peace of mind under the protection of Supreme Personality of Godhead. And then Manvantara Katha is also mentioned. The Manvantaras and their laws of Manu, they are mentioned in Manus Smriti. And they are laws to give direction to our life. Most of the people work for karma-vāsanāḥ, desire for fruitive activities. So Srila Prabhupada ji explains this shloka here in the Purport. This material world is created, maintained for some time, and again annihilated by the will of Lord. The ingredients for the creation and the subordinate creator, Brahmā, are first created by Lord Viṣṇu in his first and second incarnation. The first Purusha incarnation is Mahā-Viṣṇu, and second Purusha incarnation is Garbhodakaśāyī Viṣṇu. From Garbhodakaśāyī Viṣṇu, Brahmā is created. And the third puruṣa-avatāra is the Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, who lives as a super soul of everything in the universe and maintains the creation generated by Brahmā. So here Sarga is explained by Srila Prabhupada again. Sarga is the primary creation. So Mahā-Viṣṇu, then comes the Garbhodakaśāyī Viṣṇu. From Garbhodakaśāyī Viṣṇu comes the Brahmāji, and from Brahmāji the whole Srishti is created. And then Garbhodakaśāyī Viṣṇu further expands as Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu as the Paramatma within the heart of all the living entities. After creating Brahmāji. Correct. Shiva is one of the many sons of Brahma,
and Lord Shiva annihilates the creation. Therefore, the original creator of the universe is Bhagavan Vishnu. And he is also the maintainer of the created beings by his causeless mercy. So there is a creator, maintainer, and destroyer. Shivji is given the task of annihilation. Brahmaji is a secondary creator, but the primary creator is Lord Vishnu. And the maintainer ultimately is Lord Vishnu himself. As such, it is the duty of all the conditioned souls to acknowledge the victory of the Lord and thus become pure devotee and live peacefully in this world where the miseries and dangers are always existing. So Prabhupada is saying that if you want real peace of mind in this turmoil of material world, then surrender to Vaikuṇṭha-vijayaḥ. Vaikuṇṭha-vijayaḥ is Lord himself, and if we surrender to Lord of Vaikuṇṭha, then our kuṇṭha will be reduced. Kuṇṭha means stress or miseries, and Vaikuṇṭha means the place where there are no stress or miseries. So Lord is Vaikuṇṭha-vāsī, or Vaikuṇṭha, it belongs to Lord Viṣṇu. So he is the Lord of Vaikuṇṭha. So if we surrender to Krishna, then all kuṇṭhas will be reduced in our life. The conditioned souls who take this material creation as the place for satisfaction of senses and thus are illusioned by the external energy of the Lord remain again to be subjected to the laws of material nature, creation and destruction. Karma-vāsanāḥ. Most of the people work for karma-vāsanāḥ. They want sense gratification. As long as we remain attached to the sense gratification, we will be subjected to creation and destruction. Creation and destruction. However, if we give up the sense gratification, desire, and surrender to Lord Krishna, then we will go to Vaikuṇṭha, Vaikuṇṭha-vijayaḥ, where there is no destruction. There is always eternity, no kuṇṭha there. So this is the meaning of the shloka here. In Bhagavad Gita it is said that beginning from the topmost planet of the universe down to the lowest planet, Patal Loka, all are the destructible, and the conditioned souls may travel in space either by good or bad work or by modern spacecraft, but they are sure to die everywhere, although the duration of life is different in different planets. So this is a shloka from Bhagavad Gita, I think chapter number 10. Lord Krishna says, Ajanma bhuvanar loka. So from highest planetary system, from Brahma Loka to Bhuvanar Loka, to the lowest planetary system. This place is called as Dukkhalayam Shashvatam. There is all miseries everywhere. There is birth, disease, old age and death is there everywhere. Nobody is eternal here. You can travel in the space or wherever you go. The death is compulsory. So Lord is saying here in Bhagavad Gita that if you think that you will be happy by going the higher planetary system, which is not so. Everywhere there is a Dukkhalayam Ashashvatam. Ashashvatam means temporary. Suppose you accumulate something, then it will not last longer. It will be finished within few days. Because it is Ashashvatam. No matter how much we have, everything is Ashashvatam. Sometimes some people think that, oh, I have this, so I will be happy now. But as soon as the things are finished, the happiness is finished. So, if you really want real happiness, the eternal happiness, the only means to attain eternal life is to go home back to Godhead, where there is no more rebirth as in the material planet.
So this is Lord Krishna says in Bhagavad Gita that why are we rotting in this material world? We all should go back to Vaikuṇṭha Loka. We all should go back to Krishna Loka, where there is a eternity, Sat, Chit and Ananda. There is a peacefulness, there is happiness. So why are we suffering here? There is no birth, disease, old age, death there. It's all blissful there. The conditioned souls, being unaware of very simple fact, because of forgetting the relationship with the Lord of Vaikuṇṭha, try to plan out a permanent life in this material world. Permanent. Everybody wants to be permanent. सबको permanent job चाहिए, permanent ये वो. So everybody wants permanent, but there is nothing permanent in this world, because the world itself is temporary. Try to plan here. People are planning कि यहाँ पे हमेशा के लिए रह जाए, लेकिन ऐसा कभी कुछ होता नहीं है. कोई हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रह सकता है. Anybody, if you might be multi-millionaire, billionaire, trillionaire, everybody has to die. Being illusioned by the external energy, thus they become engaged in various types of economic and religious development, forgetting that they are meant for going back home, back to Godhead. This forgetfulness is so strong due to influence of Maya that conditioned souls do not at all want to go back to home, back to Godhead. So this Maya Shakti is very strong, and under the influence of this external energy, we start feeling that we are the Sharira, and everything connected to the Sharira is real. Even the great devotees, sometimes bhaktas also, they forget and they fight with each other, they quarrel with each other, thinking that they are the Sharira. So Maya Shakti is very strong. Mama Maya Durataya. Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Mama Maya Durataya, which means that Lord Krishna's Maya Shakti is very difficult to overcome. Mam evai prapadyante mayam etam tarantite. So Lord Krishna is saying prapadyante. Prapadyante means surrender. So if you surrender to Krishna, then you can tarantite. Tarantite means you can cross over the ocean of material world. So if you really want to overcome the problems, then only way is prapadyante, sharanam varaham. So Lord Krishna says that sarva dharman parityajya mamekam sharanam praja aham tvam sarva papebhyo mokshashyami ma suchaha. I will deliver you from all problems. So only way is to get out of this is to surrender to Krishna. But people forget it and they do not want to surrender to Krishna. They will surrender to external energy, that is Maya Shakti. By the sense enjoyment, they become victims of birth and death repeatedly and thus spoil the human lives, which are chance for going back to Viṣṇu Loka. The directive scriptures made by Manus is in the different ages, and the millenniums are called as sad-dharma. So Manu is the father of the mankind. In a day of Brahmā, there are 14 Manus. Currently, we are in the seventh Manu. Currently, is the midday of Brahmā going on, and we are in the seventh manvantara. And the name of Manu, there are different Manus every millennium. The directive scriptures which are made by this Manu is called as sad-dharma, and they are the guidance for human life, who should take advantage of all the revealed scriptures for their own interest to make their life successful termination. The creation is not false, but it is temporary manifestation, just as a chance for conditioned souls to go back to Godhead. So this world is not false. Some people say Brahma Satya Jagat Mithya. कहते हैं ये जगत सब मिथ्या है. ये जगत मिथ्या नहीं है. मिथ्या यानी एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन है, उसको मिथ्या कहते हैं, जैसे कि इल्यूजन कहते हैं.
लेकिन ये जगत तो है ही, लेकिन उसका प्रॉब्लम है एक ही कि ये टेम्पररी है, तो मिथ्या नहीं है, ये तो अस्थाई है. The desire to go back to home, back to Godhead, and functions performed in that direction form the right path for work. When such regulative path is accepted, the Lord gives all protection to his devotee by his causeless mercy. So what is needed is the desire to go back to Krishna Loka. We should, हमें डिसाइड करना है, ए प्रभु बस हमें आपके पास आना है, ये जन्म अभी आखिरी जन्म है, इसके बाद हमें यहाँ नहीं रहना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो दिन वो प्रभु जी एक आए थे, उनको पूछा आपको जाना है भगवान, नहीं 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 अभी बहुत टाइम है, अभी नहीं जाऊँगा मैं. तो क्या करना है, तो बोले अभी कोई बहुत सारा काम बाकी है. तो बोलते हैं कि अभी भगवान के यहाँ नहीं जाएंगे अभी. सो ऐसे लोग काम में लगे हुए हैं, बोलते हैं हमें बच्चे की शादी करनी है, अभी नहीं जाएंगे भगवान. हाँ नहीं नहीं, वो तो तो किसको बोला कि चलो जाते हैं भगवान के धाम आज, तो नहीं 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 बहुत बिजी हूँ, अभी नहीं, मृत्यु अभी नहीं चाहिए. अरे अभी मृत्यु आ गई तो भगवान के पास जाएंगे, नहीं 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 अभी नहीं, अभी तो बहुत काम है, बच्चों की शादी करना है. हाँ तो नारद मुनि ये कथा कहते हैं कि एक भक्त था, उसका नाम था कैलाश. तो नारद मुनि वेंट टू सी कैलाश and say Kailash you want to come to Vaikuṇṭha Loka, I am going to Vaikuṇṭha Loka. तो मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, कैलाश चलिए मेरे साथ. तो बोलते नहीं नहीं आज नहीं आऊँगा, अभी तो बहुत काम है, बिजनेस का है काम, तो अभी वैकुंठ नहीं आ सकता हूँ, बच्चे छोटे हैं, मेरा इतना सारा बिजनेस है, मैं कैसे आऊँगा आपके साथ, कुछ दिन के बाद आइए. तो नारद मुनि चले गए और फिर कुछ दिन के बाद आए तो कैलाश को पूछा, कैलाश कैसे हैं आप, चलिए वैकुंठ जाते हैं भगवान के धाम. अरे नहीं नहीं अभी तो बच्चे बड़े हुए हैं, शादी करनी है उसकी, थोड़े दिन रुक जाइए. ठीक है, नारद मुनि थोड़े साल के बाद आए वापस, तो बोले क्या हो गया कैलाश, चलो जाते हैं भगवान के धाम, वैकुंठ में जा रहा हूँ. तो बोलते नहीं नहीं अभी तो बच्चों की शादी हो गई है और उनको बिजनेस सिखा रहा हूँ मैं, और वो भी थोड़ा उनको सेटल हो जाने दीजिए. तो ठीक है चलो थोड़े साल के बाद आते हैं. तो फिर नारद मुनि ने देखा, तो कैलाश को कहा चलो कैलाश जाते हैं. तो नहीं 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 अभी तो बच्चे के पोते हुए हैं, अभी तो छोटे छोटे बच्चे पोते हो गए हैं, थोड़ा उनको भी खेलना है उनके साथ, तो थोड़ा समय और. तो ठीक है, नारद मुनि चले जाते हैं और थोड़े दिन के बाद वापस आते हैं नारद मुनि, तो देखा कि कैलाश तो चला गया है, उसका फोटो में समा गया है, कैलाश फोटो के अंदर चले गए सीधे. तो नारद मुनि ने देखा कि सब उनके फोटो की पूजा वगैरह कर रहे हैं और बाहर एक कुत्ता भौंक रहा था, भू 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 भू, उनके दरवाजे के बाहर. तो नारद मुनि ने कहा अरे कैलाश आपने तो कुत्ते का जन्म ले लिया, ऐसे कैसे हो गया. तो कहता है कि मैं मेरे मेरे बच्चे हैं जो ठीक से घर का ध्यान नहीं रखेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ ध्यान रखूँ कुत्ते के स्वरूप में. तो ठीक है चलिए आइए कैलाश, ये कुत्ते के रूप से हम बाहर निकलते हैं और वैकुंठ जाते हैं. ओ नहीं 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 बच्चे ध्यान नहीं रखेंगे, मुझे यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, अभी घर का इतना सारा प्रॉपर्टी है. तो ठीक है, कुछ साल के बाद नारद मुनि वापस आते हैं, तो कुत्ते की भी मृत्यु हो जाती है. और नारद मुनि खेत में घूम रहे हैं, तो वहाँ देखते हैं कि सर्प ऐसा ऐसा आवाज़ कर रहा है बहुत. तो देखते अरे कैलाश आपने तो सर्प का रूप ले लिया, ये कैसे हो गया. तो बोलते यहाँ खेत इतना बड़ा है और उसमें इतने सारे चूहे हैं और मेरे खेत सब मेरे बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं सर्प के रूप में आके मैं चूहों को डराता हूँ. अच्छा ठीक है चलो आना है, नहीं 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 मैं नहीं आऊँगा वैकुंठ, मुझे यहाँ ध्यान रखना है. तो ठीक है देखिए अभी नारद मुनि जाते हैं उसके बच्चों के पास और कहते कि देखिए आपके खेत में एक सर्प घूम रहा है, बहुत डेंजरस है. तो बोले ठीक है रुकिए हम आते हैं. तो लकड़ी लेके आते हैं बड़ा बड़ा, और सर्प को इतना मारते हैं कि वो सर्प वहाँ पे मर जाता है. तो नारद मुनि कहते हैं देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप कोई भी स्वरूप में आप आइए, आपकी मृत्यु निश्चित है. मैं आपको पहले ही बता दिया कि वैकुंठ जाना है, लेकिन आप तो आए नहीं मेरे साथ.
तो यही प्रभुपाद जी हमारे लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं चलिए आप इतना सा कर लीजिए तो आप मेरे साथ आ जाइए वैकुंठ धाम में। लेकिन हमारा जो मन है वो ऐसा फंसा हुआ है कैलाश के जैसा कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें बस यहीं रहना है। तो ये हमारे जीवन की बड़ी कथा है, प्रॉब्लम, कि हमारा मन जो भौतिक चीज़ों में लगा हुआ है वो मन हमें बाहर नहीं निकलने देगा, भगवान की तरफ नहीं जाने देगा। नारद और प्रभुपाद जी एक ही है? नारद और प्रभुपाद जी एक नहीं है, लेकिन वो एक गुरु परंपरा में है, एक ही नहीं है, अलग परंपरा में आते हैं गुरु, लेकिन अलग अलग है। नारद जी का अपना पोजीशन है, प्रभुपाद जी, लेकिन वो गुरु शिष्य परंपरा एक ही आता है, परंपरा एक आता है। तो उनका कार्य गुरु का यही है कि सबको भगवान की तरफ लेके जाए, लेकिन हर एक गुरु का अपना अपना अस्तित्व है और उनका पर्पस सेम रहता है कि सब भक्त लोग, सब जितने भी सामान्य जनता है, सब भगवान की तरफ चल जाए। When such a regulative path is accepted, Lord gives all the protection to his devotees by his causeless mercy. तो जब हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करने लगते हैं और हम भगवान के बताए हुए नियमों पे चलते हैं, तो भगवान भक्त को अहितुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसिद्धति, अहितुकी कॉजलेस कहते हैं उसको, अप्रतिहता, भगवान इतनी मर्सी करते हैं भक्त के ऊपर कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी भगवान की कृपा दृष्टि हो जाती है भक्त के ऊपर। जब भक्त पूरा शरणागत होता है भगवान को और कहता है हे प्रभु, मारो भी आप, राखो भी आप, आपको जो करना है वो करिए, मैं तो आपके शरणों में हूँ और सेवा करते रहूँगा। तो ऐसे भक्त दुनिया में बहुत सारे हैं जो जो भगवान की सेवा के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। While the non-devotees risk their own activities to blind themselves in the chain of fruitive reactions, karma-vāsanāḥ। तो सब लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि काम कोई नहीं करता है, भक्त भी करते हैं और सामान्य जनता भी जो उस भगवान को सरेंडर नहीं है वो भी करते हैं। लेकिन भक्त का काम जो है वो है भगवान को खुश करना, और जो अभक्त है वो अपनी काम वासना के लिए कार्य करता है। The word sad-dharma is significant in this connection. Sad-dharma or duty performed for going back to home, back to Godhead, and thus becoming his unalloyed devotee is the only pious activity. And all others may pretend to be pious, but actually they are not. तो ये जो sad-dharma जो शब्द है वो मनुस्मृति से है, और मनवंतराः जो है वो सद-धर्म की शिक्षा देते हैं। और इस शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो हमें भगवान की तरफ लेके जाना। It is for this reason only that Lord advises in Bhagavad Gita that one should give up so-called all so-called religious activities and completely engaged in devotional service to the Lord to become free from all the anxieties due to the dangerous life of material existence. तो ये श्लोका है 18 chapter 65 श्लोका, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं गिव अप ऑल द वेराइटीज ऑफ सो कॉल्ड रिलीजन, religions different type, but only religion is to surrender to God. And if we do that, we surrender to Krishna, then Krishna says सर्व हम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सब पापों का से आपको मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और आपको मैं मोक्ष वैकुंठ धाम लेके जाऊंगा। To work situated in sad-dharma is the right direction of life. One's aim of life should be to go back to home, back to Godhead, and not to be subjected to repeated births and deaths in the material world by getting good or bad bodies for temporary existence. तो जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल जाए और भगवान की तरफ जाए, भगवान के यहाँ वैकुंठ धाम में चले जाए, जहाँ पे ये जन्म मृत्यु चक्र का बंधन नहीं है, या यहाँ पे सब पाप और पुण्य के काम करते हैं, कुछ पाप करते हैं, कुछ पुण्य करते हैं, लेकिन पाप और पुण्य से हमें
अच्छा शरीर या पूरा शरीर या जो भी है ऐसा मिलते रहेगा, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए हमें अगर सच में ही चिंता मुक्त होना है तो भगवान के धाम जाने की इच्छा रखनी चाहिए। Herein lies the intelligence of human life, and one should desire the activities of life in that way. जो मनुष्य बुद्धिमान है वो यही सोचेगा कि अरे हम कहाँ फंसे हैं, चलिए निकल जाते हैं इससे बाहर। तो ये हमारा जीवन का अंतिम ध्येय है, भगवान की तरफ मुड़ना, भगवान की तरफ जाना। और कोई जीवन का ध्येय है तो उसका कोई उपयोग नहीं है।